हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा इंडियन आर्ट एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पे मैं बनाने जा रही हूँ गणेश जी की पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बनाऊंगी। तो इसके लिए जो हमने सामान लिया हुआ है, हैंडमेड पेपर लिया हुआ है, ब्लैक कलर लिया है, ऑरेंज कलर लिया हुआ है और येलो कलर लिया हुआ है और 000 का ब्रश और 4 नंबर का ब्रश लिया हुआ है। तो इसके लिए मैंने पहले पेंसिल से रफ़ स्केच कर लिया था और उसके बाद मैं ब्लैक कलर और 000 की मदद से मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले बना रही हूँ बॉर्डर के लिए। ये आउटलाइन हमारा देखिए बन रहा है और इसमें हमने डबल लाइन कर दिया है और बीच बीच में थोड़े से गैप लेकर हम बॉर्डर का डिज़ाइन इसमें बना रहे हैं। बॉर्डर हमारा पूरा हो चुका है लगभग। तो अब हम ड्रॉ करेंगे इसमें गणेश जी।
ये हमारे गणेश जी तैयार हो चुके हैं। तो अब इसमें हम करेंगे कलर। कलर के लिए हमने येलो और ऑरेंज लिया है। इसमें हमें ऑरेंज में येलो का 1/4 हिस्सा मिक्स करना है और उसके बाद फिर हम पूरा इससे पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए मैंने लिया हुआ है 4 नंबर का ब्रश। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। इसमें थोड़ा-सा हम आइज़ हैं इनके जो उसको हम थोड़ा-सा हाईलाइट करेंगे और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इनका फाइनल लुक। अगर पेंटिंग आपको अच्छी लगी है तो अभी से जाके कमेंट कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरया।